Hello everyone, a very warm good evening to all of you. Thank you for sparing your Sunday evening with me. Let us wait for people to join. Hello Dr. Khan. Hello Harpreet. It's nice to see you too. So, I'm Dr.Khusboo Kansal, consultant psychiatrist at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, and Satek Healthcare Clinic, Paschim Vihar in New Delhi. First of all, I would really like to congratulate ReLife Hospital, Dr. Avtar, Dr. Sandeep for conducting such a wonderful and very successful WebCon 2K20. And thank you for giving me this opportunity to share my thoughts about how this COVID-19 pandemic has affected our mental health and what we can do to sail over it. Uh, should we wait for some more people to join? Or I hope everybody is able to hear me clearly. Okay, so uh, let's start. In my talk, I will discuss how COVID-19 pandemic and lockdown has affected all of us and our mental health, and it had very different impact on different sections of society, and what we can do about it. United Nations has already declared the current ongoing situation of COVID-19 to be a pandemic both in terms of physical as well as mental health. It's going to be a huge crisis, mental health crisis during this and post this lockdown and COVID-19 pandemic gets over. So, what are the factors? Why this is such a huge this has such a huge impact on us? Why this is going to have such a huge impact? Because we all have never seen such a situation before. It has engulfed all of the world equally. And this is a situation no one has ever expected to happen, and no one was ever prepared. So, and still, the world does not know how it is going to further unfold. What is Everything is constantly changing. The advisories are constantly changing. The regulations are constantly changing. Medicines are constantly changing. Nobody knows. The picture of the disease is constantly changing. So nobody knows what exactly we are dealing with. And that is the source of anxiety, because we humans are really tuned or wired to live in certain certainty of our future. Like we are wired to live in, to believe that okay, this is going to happen tomorrow, this is going to happen day after tomorrow. But this situation of this COVID-19 pandemic has created lots and lots of uncertainty.
We don't know what is going to happen to us. We don't know what is going to happen to our families in terms of health, as well as we don't know what is going to happen to our work, our professions, our careers. So much of uncertainty has created extraordinary amount of stress on us. And WHO says that there are higher than usual reports of anxiety and depression now, and it is going to increase further. So, what are all the fears and anxieties we are having? I would really like to say that I would take all the questions at the last of the session so that it will be comfortable for each one of us. So, what are all the anxieties and fears we are having? First is fear of the disease. This is absolutely new virus. We don't know anything about it. What we all know is gradually, constantly changing and evolving. And considering the speed with which COVID-19 has spread all over the world, and the rising rates of infection and continuous bombardment of statistics and deaths and infections, these many are infected, these many are dead, these many are severe, these many are serious, these many are in ICUs. Constant streaming of such news has made us all fearful about our own health, our own family members' health, and very little is known about it. Despite mortality being only 3 to 4% up till now, as recorded across the populations, the novel nature and the infectiousness, the contagiousness of this virus has generated so much of fear. Second is fear of being stigmatized. To control the infection spread, the government did follow many of the containment measures like quarantine, like जो जिनको इन्फेक्शन हुआ, पॉजिटिव पाया गया, उनको क्वारंटीन में रखा गया, उनको आइसोलेट किया गया फॉर 14 days और 15 days, सो दैट वो दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सकें, टू देयर ओन फैमिली मेम्बर्स वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सकें, and then notifying those houses so as to seal the houses so as to contain the spread of the infection. And it was all done to safeguard the population and reduce the spread of this infection. But stigma followed. Stigma significantly followed the with the news coming all around about, uh, like I've read news about landlords asking doctors to vacate their rented houses, and so on and so forth. It's natural to get scared. It's natural to feel scared about your own health. But then we should look how it is going to affect us and how we are behaving as a human being. So, stress, next is stress related to lockdown. So, now lockdown. This is something which we never had earlier in centuries to go. We were never so much homebound before this. Even a small kid is used to go out to park, to play, to malls. Our movement is completely restricted. We cannot go to gyms, we cannot go to window shopping, we cannot go for eating out, we cannot go for recreation. We cannot even go out for our own work. This has affected different sections of society very differently, very differently. So lay people, men and women, have their concerns of not being able to follow their routines, like they are not being able to go to work, not being able to go to walk, not being able to meet your friends. Businesses have come to stand still. All the shops, all the small businesses, all the big businesses, everybody is shut. So, along with being idle, financial stresses are piling up. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी आते हैं, क्योंकि आमदनी है नहीं, पूरी इकोनॉमी इज शट. So people have their concerns, and these are very natural and valid. Essential service providers have their own set of anxieties, like transport workers, police.
They were doing duty all around while every one of us was at home, and they are out in the field. Their anxieties are different, and police indeed had done very good job in this scenario. They were all out, they were all maintaining it very strictly without worrying of, but कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उनके भी मन में एक फियर होगा ना, एक एंजाइटी होगी ऑफ देयर ओन हेल्थ, ऑफ देयर, एट द एंड दे आर गोइंग बैक टू देयर फैमिलीज हेल्थ, बिकॉज जितना नोवेल, जितना अनसर्टन हमारे लिए, उतना उन सब के लिए भी है, and they are exposed to it daily, that uncertainty. Similarly, healthcare workers, all the doctors, all the nurses, all the staff, all everybody who is having a clinic or working in a hospital, working in a government setting, working in a private setting, they are also witnessing, and especially those who are working with COVID-19 patients, those who are the front line in the COVID management of the COVID-19, they are witnessing so much flooding of patients. Like patients do come to government setups, flood, like like a flood, like so many patients at a time come. But this time, like कोई infection के साथ में patients एकदम से ही उनका incidence बहुत बढ़ गया है. So they are flooding into the hospitals, and increased number of death because of COVID-19. Yes, infection do has a certain number of mortality, like 3 to 4% people die of this. So mortality also they are seeing more than usual. So they are also worried about getting infected because they are exposed to completely that virus, and they are worried about their own families. And amongst that, facing the anger of the relatives and patients, it becomes too much to handle. And it is expected that these populations will have significantly increased psychological concerns. इनके मन पे जो आघात लगेगा, जो डेली यूजुअली हेल्थ केयर सेटिंग में यदि यूजुअली 1-2 डेथ्स होती होंगी, वहाँ पे 5-6 अगर हो रही हैं, तो वो जो इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. देन माइग्रेंट वर्कर्स, करोर्स ऑफ पीपल हैव वॉकड होम. बहुत सारे लोग, आप सभी जानते हैं, हमने सबने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने सब वापस अपने अपने स्टेट्स को, अपने अपने होम टाउन्स को वापस गए. उनकी अपनी सेट ऑफ एंग्जाइटीज़ होंगे of survival, of how will their kids eat food, how will their kids go to school, what will happen now, how will they get work. Then patients who are already having chronic physical and mental conditions, for example cancer patients, for example patients with mental illnesses, persons living with psychiatric illnesses, have problems related to access to healthcare and medicine availability. They have their own set of anxieties because, yes, though the health sector is very readily available, but still, because of the lockdown, accessibility is an issue. Then, medicine availability, they are all worried about whether they will be able to get the medicines or not. Then along with that, hearing all the time news about mortality in people with chronic diseases and risk of morbidity, it's natural to feel anxious. Then drug related issues. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स यूज़ करते थे, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, जो भी लोग यूज़ करते थे. अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को ड्रग्स मिले नहीं, सो दे माइट बी हैविंग देयर ओन challenges of withdrawal and anxieties related to that, and उनके treatment issues. Then family issues. This is a very important issue now. Uh, those who were like families, for all the families, this lockdown has been either a boon or a bane. Those families जो कि जिनको समय नहीं मिल पाता था एक दूसरे के लिए, but
वो चाहते थे कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनके लिए तो बहुत अच्छा एक तरीके से मौका मिला कि एक साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला एक दूसरे के साथ। बट ऐसी भी कई फैमिलीज़ हैं दोज आर नॉट इन गुड टर्म्स विद ईच अदर एंड दे आर स्टक टुगेदर इन दिस लॉकडाउन। They don't have the breather now, okay, going out for work, going out for play, so they don't have a breather and they are stuck together. So family issues, discords, marital discords. चाइना में एक स्टडी हुई थी कि पोस्ट वुहान में जब कोरोना का एक फेज़ ओवर हुआ उसके बाद डिवोर्स रेट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। देर आर मैनी challenges, financial challenges to that, फिर आपसी compatibility, relationship issues come because everybody is stressed out. Everybody is really stressed out. So to handle that, to handle each one of us, it becomes tricky. For women, whether they are either stay at home or working mothers, this lockdown have proven to be very challenging. As their workload has doubled, domestic healths are not there because everything is shut. So they have to do all the household chores. सब करना पड़ता है काम उनको. And along with that, everybody is at home. So every lady is not very lucky to have a cooperative family. So their work has doubled. And it is very rightly said that empty mind is devil's workshop. So being idle, we have seen very significant rise in cases of domestic violence and child abuse cases. Domestic violence की national helpline and child abuse की national helpline has recorded a very significant and steep increase in calls, distress calls during this lockdown, because perpetrators are there at home and the victims have nowhere to go. So, and one section of society is students, which is really affected very much with this. Students in all the streams and classes with exams postponed. जैसे आप सब जानते हैं कि 10th and 12th के exams जो हैं वो mid में CBSE के board exams were, कुछ exams हो गए थे, कुछ रह गए थे, so mid में they were postponed. And with all this new normal of online classes, like we are not habitual of this online classes, it will take a lot of time to adjust. Not being able to meet friends also is a point of concern in young generation. So after we have seen all these negative aspects, we should also look at what is positive in this, because negative will only create more negativity. So let's find out what is positive in this all this situation. Uh, our Indian population has been found to be highly resilient in terms of adapting to new avenues and challenges. बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी अडेप्ट करती है चेंजेस को एंड इट इज़ वेरी रिजिलियंट. Though the disease is highly contagious, ये समझते हैं हम बहुत ज़्यादा contagious है, बहुत जल्दी फैल रही है. मतलब like अभी तो दिसंबर में it was found in China and अभी it's only May ongoing and it has already spread to most of the countries in the world and at a massive scale. Still, the mortality is only 3 to 4% across the populations. Yes, we should follow the safety precautions and advisories as the government has given. But still, we should think कि yes, this is highly and 80%, as WHO says, 80% of the cases are asymptomatic. मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बीमारी हुई. So we should, rather than panicking, we should think कि it's okay. We should strive to be more healthy physically and mentally, so as कि यदि हमको इन्फेक्शन होता भी है तो we can tide over it very easily. Also, इस lockdown or इस slow down, rather than lockdown we should say slow down of our lives, we got so much time to think and ponder over
कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ्स के अंदर, और हम अपनी फैमिली से कनेक्ट करने का हमको टाइम मिला. वी गॉट टाइम टू मेंड आवर रिलेशनशिप्स. दैट जो रिलेशनशिप्स थोड़े ख़राब हो गए थे उनको हमको मेंड करने का टाइम मिला. इट्स नॉट नेसेसरी टू जस्ट गो. इट यू कैन जस्ट कॉल अ पर्सन जिससे आपको लगता है कि आपको अपना रिलेशनशिप को थोड़ा मेंड करना चाहिए. सो दिस इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक, और इतने सारे सोर्सेज ऑफ एंग्जाइटी है एवरीवेयर, हमको सिर्फ एंग्जाइटी ही मिल रही है एंड अनसर्टेनिटी है. जिससे भी पूछो एवरीथिंग इज अनसर्टेन. व्हेन विल स्कूल्स रीओपन, वी डोंट नो. व्हेन विल शॉप्स रीओपन, वी डोंट नो. व्हेन वी विल बी एबल टू बाय दीज थिंग्स, वी डोंट नो. So what is the healthcare facility, we don't know. So everything is very uncertain, and let's see how we can maintain our sanity, how we can maintain our stress in this time. First of all, we should be very empathetic towards affected people. अब जैसे जैसे केसेस राइज होंगे, दिल्ली में भी ऑल इट्स अराउंड 10,000 केसेस नाउ. ऑल ओवर इंडिया इट्स अराउंड 1 लाख केसेस के पास में पहुंच गया फिगर. सो वी शुड बी empathetic towards the affected people. As in, we should not stigmatize them कि ये affected है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया. This is an infection. ये किसी को भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है. So they have not done anything wrong. So rather than stigmatizing them, rather than उनको से देखने से अच्छा उनको help करो, whatever help we can do. Obviously maintaining all the precautions like maintaining एक दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, but do not stigmatize them. Restrict excess news exposure. Correct information is very, very necessary. News channels are already doing lot of tremendous job of exposing you to all the statistics, all the like पूरा एकदम bold में कि these many deaths are, आज इतनी deaths हुई, आज COVID-19 के इतने नए cases आए, आज ये हुआ. So all the news channels expose you to the negative information. So I would say please refer to only authentic government sources. एडवाइजरीज़ के लिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी हमको किस तरह से इस चीज़ को डील करना चाहिए. अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या सपोज़ किसी को ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो कि भी मेरे गले में दर्द है या फीवर आ रहा है या जो भी सिम्टम्स हैं कोरोना के, यदि आपको लगता है आपको है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. एंड इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड सोर्सेज से ही लें एंड ओनली एट रेगुलर इंटरवल्स. कॉन्स्टेंटली न्यूज़ चैनल्स को देखने के बजाय दिन में एक बार आपने 15 मिनट्स आपने गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज खोल के देख लिया कि ओके दिस इज़ दी टुडेज कंडीशन. सारा दिन देखने की ज़रूरत नहीं है. देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप. Maintain very good sleep hygiene. Sleep is extremely important in reducing stress. हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट हम स्लीप में ही गुजारते हैं. सो स्लीप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. अब जैसे हम सब लोग घर पे हैं. सॉरी. तो हम पूरी तरह से रूटीन घर पे फॉलो करते नहीं. कब सोना कब जागना, रात को 2 भी बजते हैं 3 भी बजते हैं, नहीं सोते टाइम पे. बट for this longer period we should first of all maintain sleep hygiene. अब वो कैसे करेंगे? First of all stick to your routine. Please sleep at the same time and get up at the same time. It is and please restrict your screen time before sleep, at least 40 minutes before sleep. Then eat on time. Then please restrict your alcohol, caffeine use, coffee, tea, chocolate intake after in the late evening and night. Then keep your room dark and comfortable, cozy to sleep. So and do not clock watch. यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो please get up and do some activity so that आप
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं एंड देन कम बैक टू स्लीप. डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू स्लीप. Maintain very good, take care of your sleep. It will take care of your mind. Then take care of your diet. I have seen very good sessions were taken on nutrition and diet today in the webinar. uh, Maintaining healthy diet is very very important, not only for physical health but also for mental health. Eat more and more fruits and vegetables. In this summer, keep yourself hydrated. Drink water, drink nimbu pani, drink nariyal pani, drink charge. Take lot of fluids to keep yourself hydrated and energetic. Because जो ये पहले की कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये बिल्कुल सही है. जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, एंड वी रियली फील दैट वे. इफ़ यू ईट लाइट, वी रिमेन लाइट. अब तो इस पे बहुत ज़्यादा एविडेंस भी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है इसके ऊपर अब तो, कि भी यू हैव टू कीप योर गट हेल्दी. अपने पेट को काफ़ी हेल्दी रखने की ज़रूरत रहती है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए. देन प्लीज़ डू एक्सरसाइज. जो भी आप घर में कर सकते हैं, घर में करने के लिए बेस्ट इज़ लाइक आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं. योगा इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ. एंड आप क्या नाम है, थोड़ा वॉक कर सकते हैं घर में, टेरेस पे वॉक कर सकते हैं. 30 to 40 minutes of exercise every day is very very important for your mental health. देन मेडिटेशन. हमको जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो जब हम ध्यान करते हैं, इट इज़ बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ध्यान सिर्फ सन्यासी या साधु संतों के लिए है. ऐसा नहीं है. ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, इट इज़ बेसिकली कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपका पूरा पूरा ध्यान हो. जैसे हम यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं ब्रश कर रही हूँ, तो आप में से किसी को भी याद नहीं होगा कि हमने ब्रश कब में क्या किया, कैसे किया. सुबह में हम उठे, हमने ब्रश किया, एंड क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हम डेली करते आए हैं बचपन से, तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया है, एंड वी डोंट रिमेंबर व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दैट. बट टू बी माइंडफुल इज़ विल बी टू, जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप उसको फील कीजिए कि जैसे हाँ ओके, दिस ब्रश इज़ गोइंग हियर, एंड टूथपेस्ट का टेस्ट क्या है, एंड दैट बीइंग, मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब यू कैन फॉलो दिस थ्रू आउट योर डे. This is like being mindful of whatever you're doing during the day, throughout the day. So this is being mindful and being मेडिटेटिंग इज़ लाइक, मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं. जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आप कंफर्टेबली कर सके, वो आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं. लाइक कई लोग कोई मंत्र पढ़ के मेडिटेशन करते हैं, कई लोग सिर्फ सांस पे ध्यान दे के मेडिटेशन करते हैं. देर आर मेनी वेज टू डू मेडिटेशन. इट रियली हेल्प्स लोअर डाउन द स्ट्रेस, क्योंकि वो हमारा ध्यान जो है वो बाकी सब चीज़ों से, थॉट से हटा के हमारे कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर चीज़ पे लेके आती है. तो उससे हमारा मेंटल हेल्थ, उससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो लोअर डाउन हो जाती है. डेवलप हॉबीज़. ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ रही होंगी जो हमने सोचा होगा कि हमको, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हमें बस टाइम ही नहीं है काम कर अपनी हॉबीज़ डेवलप करने का. अब इस टाइम को यूज़ कीजिए उन हॉबीज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल डू गार्डनिंग, डू कुकिंग, जो भी आपको पसंद हो, डू स्केचिंग, पेंटिंग. बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं घर में रह के, एंड उसका बहुत अच्छा फ्रूट आ सकता है. लाइक आप अच्छी किचन गार्डनिंग कीजिए, आपको उसमें जब छोटे छोटे पौधे आएंगे तो आप उसको देख के, या फ्लावर्स आएंगे तो उसको देख के आपको बहुत खुशी होगी. तो दैट एक्चुअली बूस्ट्स, गार्डनिंग एंड प्लांट्स बूस्ट्स योर मेंटल हेल्थ लाइक एनीथिंग. देन ये तो सारी चीज़ें हैं जब हमको प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाती है, कि हमको प्रिवेंट करना है सारी, कोई भी स्ट्रेस को, कोई एंग्जाइटी को. और हाँ, जैसे हमारे जो बच्चे हैं
वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं क्योंकि उनके लिए भी सारी सिचुएशन तो एकदम अनसर्टेन है। उनका स्कूल बंद हो गया, उनके प्ले बंद हो गए, दे आर नॉट गोइंग टू गेम्स, दे आर नॉट गोइंग फॉर पार्क, दे आर नॉट गोइंग फॉर देयर क्लासेस, दे आर नॉट गोइंग फॉर डांस, नॉट गोइंग फॉर स्विमिंग, जिस चीज़ के लिए भी दे वर यूज टू। सो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर कि गिव योर किड्स age appropriate information regarding this disease and try to maintain their routine। उनका रूटीन बिल्कुल स्टिक करिए कि भी हाँ ठीक है बेटा, आपका ये स्लीप टाइम है, नाउ इट्स योर वेक, आप उठने का टाइम हो गया है, एंड देन दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम। Children usually excel when they are in a routine. They really like to be in a routine. So please try to maintain their routine as much as possible. Their classes, like जो अभी आजकल ऑनलाइन हो रही होंगी, और यदि नहीं हो रही होंगी तो उस जिस टाइम पे उनकी क्लासेस होती हैं, make them sit and study so that their routine is followed। And try playing games, indoor games like कैरम बोर्ड, लूडो, बहुत सारे गेम्स हैं आप जो जैसे कार्ड्स और चीज़ें बहुत सारी हम इकट्ठे मिलके एज अ फैमिली कर सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने देखा है जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अब इस फियर के साथ आ रहे हैं। आई हैव हैड लॉट मेनी पेशेंट्स जो बोलते हैं कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम घूमने नहीं जा सकते हैं, हमको पाल्पिटेशंस होती है, दिल ऐसे दौड़ के धक 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 करता है, देन हाथों में स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। सो एंग्जाइटी सिम्टम्स के साथ, दीज आर ऑल एंग्जाइटी सिम्टम्स, एंग्जाइटी सिम्टम्स के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास अब। सो आप क्या कर सकते हैं बीइंग अ पेशेंट? तो जो मैंने पहले सारी चीज़ें बताई कि आप अपने रूटीन को स्टिक कीजिए, स्लीप का ध्यान दीजिए, खाने का ध्यान दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। बट यदि आपके फैमिली में कोई ऐसे पेशेंट है जो काफ़ी एंग्शियस फील कर रहा है, उसके टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? Do not, first of all, please do not engage in any talks related to corona or financial health और कोई भी ऐसी चीज़ या टॉपिक जिससे उनको स्ट्रेस हो सके। प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में आप प्लीज़ डू नॉट टॉक टू देम about it। प्लीज़ पॉइंट पॉजिटिव थिंग्स आउट, जैसे कि ओ वाओ आज वेदर कितना अच्छा है, ओ वाओ कितना अच्छा है ना, रिलैक्स्ड है, चलो लेट्स वॉच अ मूवी। हेल्प इन किचन, जैसे किचन में आप मिल के उनको साथ लगाइए, जो भी एंग्शियस आपके घर में मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उसको आप साथ में लगाइए किचन में कि अब आओ चलो कुछ लेट्स लेट्स कुक समथिंग, लेट्स डू समथिंग न्यू, do things together, like मैंने पहले भी कहा, please play games together, then see family albums, it's a huge stress buster। जब आप पुराने फोटोज़ खोल के देखते हैं and then it's all that come back, all wedding की फ़ोटोज़, चाइल्ड की फ़ोटोज़ जब आप देखते हैं तो वो सब जो एंग्जाइटी स्ट्रेस वो सब चला जाता है जब हम अपने पुराने टाइम में जाते हैं। इट्स अ ह्यूज स्ट्रेस बस्टर, आप करके देखिए प्लीज़, सिट विद योर फैमिली विद एन एल्बम, इट विल बी रियली गुड एंड वेरी क्वालिटी टाइम। एंड आपके मन को इतना बूस्ट मिलेगा उससे कि पूछो मत। देन एंगेज इन वीडियो। अगर आप अकेले हैं, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं, तो प्लीज़ यू कैन एंगेज इन वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स विद योर फैमिली। बहुत सारे आप फैमिली सब मेंबर्स को आप जैसे जूम पे कर सकते हैं मीटिंग, या फिर आप इवन अब तो गूगल मीट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फैमिली की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, लाइक मेनली women एंड चाइल्ड। So these people should try contact helplines and look for the help। I know this is very tough time,
but you should take a call. You should discuss this with your family members, and you should talk to someone rather than उसको झेलते रहने की बजाय. And it's okay if you're not able to do lot of things and be very productive. एक ही प्रेशर और है नया इंटरनेट के ऊपर कि आपका ये लॉकडाउन का पीरियड है, आपका एक खाली पीरियड है, आप यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. तो एक ये भी मैंने देखा है पेशेंट्स के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि हमने बहुत कुछ करना है. पर इट्स ओके, टेक योर ओन टाइम, इट्स ओके. ये स्ट्रेसफुल टाइम है. यदि आप बहुत कुछ नहीं भी कर पाओ और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं भी हो पाओ इस लॉकडाउन के दौरान, तो भी इट्स ओके. यू हैव सर्वाइव्ड. अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक कि हम सब इसी एक ही नाव में सवार हैं और हम सबको इससे बाहर आना है, एंड वी ऑल विल कम आउट ऑफ इट. जस्ट थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है. स्टिल यदि आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू कोप और हैंडल एनीथिंग, और एंग्जाइटी और घबराहट या उदासी यदि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, वी आर अवेलेबल. यू कैन कॉल अस एनी टाइम, एंड वी आर we will be available to take your calls and to help you. And now I would really like to see if I have any questions. Okay. Okay, so once again, I would like to say thank you to all my dear viewers for such a patient listening on a Sunday evening. And please take care of your health. Please take care of your mental health. It's very important. We all know कि ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन टाइम है, बहुत ज़्यादा अलग सा टाइम है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट येस, वी ऑल आर इन द सेम बोट एंड वी ऑल कैन कम आउट ऑफ इट. And I really thank ReLife Hospital for giving me chance to speak. Thank you, Dr. Avtar. Thank you, Dr. Vishnoi, for thank you, Dr. Sandeep, for giving me the opportunity. And thank you, everyone. Take care, stay safe, stay home, and take care of your mental health, take care of your physical health.